सीखा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास. इफ यू कैन क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ALU, CPU. memory. CPU. All right. CPU. Input devices are used for what? Displaying the Entering data. data. Entering data. Entering data. Nice. Which is not a computer application area. Education, bank. Agriculture. Sleeping. Sleeping. Agriculture. नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर कंप्यूटर के यूजेस हैं. Sleeping. राइट. Sleeping. नाइस. ओके. नाइस. Which of these is an output device? Printer. Printer. Joystick क्यों नहीं? Dynamic. Do you know what is joystick? गेम नहीं. खेलने के लिए. राइट. तो वो इंस्ट्रक्शन लेता है, वो देता नहीं है. सो आंसर इज प्रिंटर. राइट. CU stands for Control unit. Control unit. control unit. Very nice. ALU performs what? Calculation. Calculations. Nice. Temporary memory is called, अभी हमने डिस्कस किया था, RAM. 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 रोम नहीं है, RAM है. ठीक है. Excellent. Cloud computing uses what? Internet, Bluetooth, local servers or LAN? Internet. Internet. Local Exactly. server. एग्जैक्टली इंटरनेट. मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, जैसे आपने गूगल ड्राइव की बात की मैंने. तो वो जब आप कहीं और लॉग इन करते हो तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके नहीं कर सकते, आप लोकल सर्वर का यूज करके नहीं कर सकते, लैन का कनेक्ट करके नहीं कर सकते, वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा. ठीक है. अगर कहीं कंफ्यूज होते हैं किसी क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर, जस्ट टेक अ पॉज, थिंक. आप और मैं, हम रोज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप यूज से उसको रिलेट कर पाओगे, यू विल गेट द आंसर. ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? Aadhaar. Aadhaar. Great. The component that executes instruction is? Execute. Control unit. Control Yeah. unit. Okay. Anyone else? ALU. Okay. Control unit. CPU over there. Who said CPU? Okay. CPU is actually a right answer. But यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हुए, मैं बताता हूँ. हमने वहां पे जो यहां से डेटा आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. इस इंस्ट्रक्शन को कवर करना किसी एक यूनिट का काम नहीं है, तीनों यूनिट का काम है. एंड तीनों यूनिट मिला के क्या बन रहा है? CPU. अगर यहाँ पे होता ना कि कैलकुलेशन कौन करता है, तो फिर आपका ALU बिल्कुल सही आंसर होता. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मतलब इनपुट डिवाइस से जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहा है उसको पूरा का कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड CPU, क्योंकि वो तीनों कंपोनेंट मिला के काम कर रहे हैं. तो CPU इज द राइट आंसर. Data entered into the computer is called what? Input. Okay. Full form of IoT is Things. Internet of Things. Internet of Things. ठीक है. Which device stores data permanently? Hard disk. Hard disk. Okay. Computers का प्रोसेस क्या है? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट. B. दिस इज B. Input, process, output. Nice. Example of secondary storage is Pen. Pen drive. pen drive. That is right. ठीक है. Education app uses what? IoT, AI and cloud technology, hardwares only or none?
AI and cloud AI and cloud technology. technology. AI एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, दैट्स राइट। इसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं जो मैंने बताया आपको, जैसे व्हीकल कनेक्टिविटी जो चीजें हैं उसको बोलते हैं, जैसे स्मार्ट होम्स हो गए, दैट कम्स अंडर आईओटी, सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। Basic function of an operating system: runs game, manage hardware and software, browse the internet, or writes code. Browse the internet. Okay. Manage the hardware and software. Okay. OS क्या काम करता है? जो भी आप सॉफ्टवेयर डालते हो, जैसे आपने MS ऑफिस डाला, गेम्स डाला, और यहाँ पे आपका ये कंप्यूटर है जो कि पूरा का पूरा हार्डवेयर है, इसको इससे कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने बताया था। इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, दैट इज कॉल्ड OS। OS का काम आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है। Yes. दिस इज द राइट आंसर। Which of these is not a hardware? MS MS Word. MS Word. Good. File storage on the internet is done using. Cloud computing. cloud computing. Okay. Cloud computing. Government online services are part of. E-governance. E-governance. Right. A monitor is input, output, storage, processing. Output device. Okay. And CPU performs input, processing, Processing. output, storage. Right. Processing. We just discussed it. Good. IoT connects people only, devices to the internet, software and data only. Devices to Devices to the internet. This is the right answer.